દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કર્યું देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। प्राप्त माहिती अनुसार आयुर्वेद दिवसना प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए देश का प्रकृति परीक्षण अभियाननी जाहेरात करी, जे आयुर्वेदने प्रोत्साहित करवा अने तेने दैनिक जीवનમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટેની રાષ્ટ્રીય પહેલ છે। આ અભિયાન 26 નવેમ્બર 2024 ના રોજ બંધારણ દિવસ સાથે શરૂ થશે અને 25 ડિસેમ્બર 2024 સુધી ચાલુ રહેશે। આ મહિના લાંબા અભિયાનમાં देशभरना आयुर्वेद कॉलेजों विद्यार्थीओ, शिक्षकों और प्रेक्टिशनरों सहित लगभग 3,50,000 स्वयंसेवकों भाग लेशे। आ स्वयंसेवकों 10 मिलियन थी वधु परिवारों माटे प्रकृति परीक्षणों करशे, जे आयुर्वेदना सिद्धांतों और प्रथाओं ने होस्पिटलों थी बहार लावीने घरों में लावशे। आयुषना राज्यमंत्री प्रतापराव जाधवे तेमना संबोधनमां आ अभियानना महत्वने रेखांकित कर्युं। તેમણે આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય આયુર્વેદના ફાયદાઓ વિશે જાગૃતિ લાવવાનો અને આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે તેના અપનાવવાને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે। આયુર્વેદ માત્ર એક દવા પ્રણાલી નથી, પરંતુ એક જીવનશૈલી છે જે પ્રકૃતિ સાથે સંતુલન અને સુમેળને પ્રોત્સાહિત કરે છે, તેમ તેમણે જણાવ્યું। અભિયાનમાં આરોગ્ય શિબિરો, શૈક્ષણિક વર્કશોપ અને સમુદાય પહોંચ કાર્યક્રમો સહિતની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થશે। स्वयंसेवकों घरों में जईने प्रकृति परीक्षणों करशे, जेमां आयुर्वेदना सिद्धांतोना आधारे व्यक्तिओना आरोग्यनुं मूल्यांकन अने व्यक्तिगत आरोग्य भलामणों आपवी शामिल छे। आ परीक्षणों परिवारोने तेमना अनन्य शरीर बंधारण ने समजवामां अने आहार, जीवनशैली अने कुदरती उपायों द्वारा श्रेष्ठ आरोग्य जाळववामां मदद करशे। प्रधानमंत्री मोदीए तेमना भाषणमां आधुनिक विश्वमां आयुर्वेदना महत्वने रेखांकित कर्युं। તેમણે નોંધ્યું કે આયુર્વેદ ઘણા આરોગ્ય પડકારો માટે ટકાઉ અને કુદરતી ઉકેલો આપે છે અને નિવારક આરોગ્ય સંભાળમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે। આયુર્વેદને દરેક ઘરમાં લાવીને અમે લોકોને તેમના આરોગ્ય અને સુખાકારીની જવાબદારી લેવા સક્ષમ બનાવી રહ્યા છીએ, તેમણે કહ્યું। દેશ કા પ્રકૃતિ પરીક્ષણ અભિયાન પરંપરાગત ભારતીય દવા પ્રણાલીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમને આધુનિક આરોગ્ય સંભાળ પ્રથાઓ સાથે એકીકૃત કરવા માટે सरकारना व्यापक प्रयासों भाग है। आ अभियाननो जाहिर आरोग्य जागृति अने मुख्य प्रवाहना आरोग्य प्रथाना रूप में आयुर्वेदना अपनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़शे तेवी अपेक्षा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की घोषणा की थी। आयुष मंत्रालय द्वारा इस अभियान का प्रथम चरण 26 नवंबर 2024 अर्थात संविधान दिवस से आरंभ होकर 25 दिसंबर 2024 अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती दिवस तक 1 माह तक चलाया जाएगा। देश के आयुर्वेद महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, अध्यापक तथा देश में स्वास्थ्य सेवा देने वाले आयुर्वेद के चिकित्सक मिलाकर लगभग 3.5 लाख प्रकृति परीक्षण स्वयंसेवकों द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों का प्रकृति परीक्षण होगा। आयुर्वेद को चिकित्सालय से बाहर लाकर हर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल इस कार्यक्रम के साथ हम कर रहे हैं।